Okay, so hello student, so let's start our next lecture. Okay, so we'll begin from where we have ended our last class. Okay, तो start करते हैं. देखिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, इफ x माइनस ट्वाइस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस. So we have to find so you have to find the value of lambda. Find lambda. Okay, so you have to find the possible values of lambda. Now in this question, so what we will do, see, so let's, this is the equation of the circle. Okay, so according to the equation of the circle, यहाँ पे क्या बोला है, सेंटर क्या बोला है, तो सेंटर इज इक्वल टू, सेंटर इज 8,7, that is C 8,7. Okay, and radius is r, which 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 square. Okay, so radius will be r equal to 3. Okay, so from this we got two things, radius and center of the circle. Okay, now let's assume this is the equation of line. Let's assume this is the equation of line. Equation क्या है, x minus twice y plus of lambda is equal to 0. So if we assume this is the equation of a line, तो हमें क्या पता है, we know in the straight line we have already studied the distance of a line from its, तो distance between a point and a line. तो वो क्या था, if a point is given x1 y1 and we need to find the distance ax plus by plus of c equal to 0 from this line. So distance d equal to, हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे simply ax1. just we have to put this x1 and y1 को लाइन के इक्वेशन में पुट करना था, ax1 plus by1 plus of c लिख के नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y क्या है, a स्क्वायर a एंड b है. ठीक है, तो उनका स्क्वायर्स करना था. ओके, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे. जस्ट यहाँ पे क्या है, वी नो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट m. सो वी नो दिस इज इक्वल टू रेडियस r. सो रेडियस इज 3 यूनिट, विच, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट ax1 मतलब a क्या है, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x1 माइनस ट्वाइस y1 प्लस ऑफ lambda by root over 1 square plus of 2 square minus 2 square, वो तो 2 square ही बनेगा. ठीक है, ओके. फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो x1 का वैल्यू कितना है, 8 माइनस y1 का है 7, इट विल बी इक्वल्स टू 14 प्लस ऑफ lambda by root 5. So now, so from this we got 3 equal to modulus minus 6 plus lambda by root 5. Okay, from this we got two values of lambda. Lambda is equal to क्या होगा, 3 root 5. So okay, anyway, तो इसको अच्छे से करते हैं, राइट. तो I got plus 3 equal to what, minus 6 plus lambda by root 5 or minus 3 is equal to minus 6 plus lambda by root 5. So from this we got lambda is equal to 3 root 5 plus of 6, this one is 1, and from this we got lambda is equal to minus 3 root 5 plus of 6. So we got two different values of lambda. Okay, basically we got two different values of lambda. हमें दो lambda का वैल्यू क्यों मिलेगा, क्योंकि ये वाला इक्वेशन का स्लोप क्या है, द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू, अगर उधर जाएगा तो ट्वाइस y, यहाँ जाएगा तो माइनस लैम्डा प्लस. तो कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे स्लोप कितना बन रहा है, 1/2 बन रहा है. इफ यू कंपेयर आवर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, स्लोप इक्वल टू 1/2, तो स्लोप इक्वल टू हाफ वाला लाइन, दो पॉसिबल लाइन है. एक लाइन तो यहाँ पे भी बनेगा, लाइक
one line will be here, the another line will be there. तो इस हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, there are two possible lines, that's why we got two values of lambda. Okay, that's why we got two values of lambda. तो इसका एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, फाइन. Okay, fine. Then we will go to the next topic, length of chord. Okay. So next, going to the length of chord. Let's say this is a circle. Let's make a circle. So this is a circle. Let AB be a chord. Okay. Let AB be a chord, and M is the midpoint of the chord. Okay. We know it will make perpendicular or 90 degree with the center. Okay. Anyway, so how can I find the length of chord? Let's say this distance is R. Let's say this distance is P. So we know what is AM. So AM will be what? AM will be what? AM square will be equals to R square minus P square, right? So AM will be what? AM will be equals to root over R square minus P square. So we can find the distance AB. So distance AB what? Twice AM. So it will be equals to AB will be equals to, that is length of chord will be equals to twice root over R square minus P square. So this is very simple. Okay. Now we are going to come across length of tangent. Length of tangent. Okay. Let's find how we can find the length of tangent of a circle. Okay. Now let's say this is our circle. This is our center. Okay. Let's take a point P. Let's take a point P which is outside of the circle, and the coordinate of the point P is x1, y1. Okay. Let center of the circle be minus z, minus f. For the general equation, अगर we are taking the general equation of a circle, तो उसका center क्या होगा? Minus z, minus f होगा. Correct? Okay. Let's draw a tangent. Okay. So this makes the 90 degree with the circle. Okay. Let this intersection point, let's say this is M. Okay. And this is radius R. Okay. Now, what you can say? We can say that PM square will be equals to PC square minus MC square. Okay. PM square is equal to PC square minus of MC square. Okay. So what will be the value of the PM square? So what is the value of the PC square? So basically, what is the value of PC? So PC is equal to root over. So PC will be PC square. So we know PC will be equals to x1 plus z का square plus y1 plus f का square. Okay. ऊपर में root over लगेगा, फिर उसके ऊपर square लगेगा, तो ये become like this. Minus of MC square. MC square is what? MC square is R square. So basically we know what is R square. R square is basically Z square plus F square minus of C. So this is the value of R, right? So from this we can write Z square plus F square minus of C. Okay. Now if we break this one, let's say let this PM square is equal to, let's take length as L square. Okay. Now this one x1 square plus z square plus 2z x1 plus y1 square plus f square plus 2y1f minus z square minus f square minus it become plus c. So I can see that z square is z square getting cancelled out, and f square is getting also cancelled out. Okay. So what does it become? It becomes x1 square plus y1 square plus 2zx1 plus 2fy1 plus of c is equal to L square. Okay. Now if I remove this square over here, it will become like this. L is equal to this. Now can I say this is exactly S1?
where we are representing S1, putting x1 and y1 in the equation of circle S. And this is the circle of equation S equal to 0. Okay. Now putting in place of x and y, putting x1 and y1, we will get S1. Okay. So वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? L is equal to root over S1. So this is the length of tangent drawn from a point x1 and y1. Okay. So length of tangent from x1 y1 will be equals to root over s1. Okay. So length of tangent from x1 comma y1 to s is root s1. Okay. So this would be the length of tangent from a circle from a point s1 x1 comma y1. Please note it down. Okay, now discuss the another topic. This is power of a point. Okay, so अभी हम देखेंगे power of a point वाला topic क्या है. ठीक. So give a heading power of a point. It interesting to hear the name ना. So power of a point क्या है. Okay, let's say let's take this is a circle. Okay, this is a circle. Let's take any point P with a coordinate x1 comma y1. Okay, now any point, if this is distance r, and let's take this is angle theta, it makes an angle theta, and we are taking this circle as s is equal to 0. So we know what is, so हम उसको GFC सर्कल भी बोलेंगे. तो GFC सर्कल मतलब क्या है? G हमारा सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ हमारा सेंटर है और हमारा C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, तो उसको GFC सर्कल भी बोलते हैं विच रेडियस r. ओके ओके, and GFC, C is the constant term particular. Okay, minus G comma minus F center है and C is that particular constant one. R is equal to root over G square plus F square minus of C. तो वो वाला C है. Okay, let's take origin as let's take center is O, that is minus G comma minus F. Okay, now if this particular distance is R and from this line it cuts the circle at two distinct points, that is at A and B. Okay, now it will be equals to what? x1 plus, so what will be the coordinate of A? It will be x1 plus r cos theta, क्योंकि इधर कितना होगा, ये वाला होगा r cos theta. Okay, and this distance will be what? r sin theta. So basically ये वाला हम पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज कर रहे थे, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम ऐसे यूज करते थे, राइट? तो x प्लस r cos theta comma y1 plus r sin theta. So this would be the coordinate of A. Okay, similarly this might be coordinate of B if the r is different. तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज मिल रहे हैं. लेट्स दिस वन इज r1 एंड यहाँ पे हम इसको लिखते हैं r2. डिस्टेंस r1 है, डिस्टेंस r2. सो डिस्टेंस AP इज इक्वल टू r1 एंड डिस्टेंस BP इज इक्वल टू r2. तो हम उसको कलेक्टिवली दोनों को r लेते हैं, ठीक है? सो ओके, नाउ I can write the equation of the circle. So how can I write the equation of the circle? I know what is the equation of the circle, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus of c equal to 0. यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एज मैंने a को पॉइंट x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा लिया है. यहाँ पे पॉइंट a और b दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने r1 और r2 स्पेसिफाई नहीं किया है. तो इन जनरल ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो पॉइंट ए भी हो सकता है, पॉइंट बी भी हो सकता है, एंड बोथ दीज पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग इन दिस इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. ओके, बोथ द पॉइंट ए एंड बी इज सेटिस्फाइंग एंड इट इज
इन दैट पर्टिकुलर सर्कल। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अभी ये वाला पॉइंट जब सर्कल में एग्जिस्ट करता है तो वी कैन पुट दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन। तो इसमें तो s इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन में हम वी कैन पुट इट, राइट। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस ट्वाइस f इंटू y1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। सो ये वाला मुझे मिल गया। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2x1r cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2y1 r साइन थीटा प्लस, ओके, नाउ 2gx1 प्लस 2gr cos थीटा प्लस 2fy1 प्लस 2fr साइन थीटा प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही लंबा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन से, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। ये दोनों टर्म गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या आर स्क्वायर का कोई और टर्म है, नहीं है, तो अभी आर वाला टर्म लेते हैं, ओके। आर वाला टर्म देखो, ये बन गया ट्वाइस x1 कॉस थीटा, ये वाला टर्म गया यहाँ पे दिस वन प्लस ट्वाइस y1 साइन थीटा, ओके, ये वाला भी गया, ओके। नेक्स्ट ऑब्जर्व करो, और कोई है क्या आर का टर्म, यस, दिस वन है, दिस वन 2g cos थीटा एंड क्या क्या है, 2g cos थीटा प्लस 2f साइन थीटा, ओके, ये वाला है। बचा है क्या, बचा है मेरा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो हमने पूरा टर्म लिख लिया। तो लास्ट में क्या बचा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 इज इक्वल टू 0। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये वाला देखो, दिस इक्वेशन मेक्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R। तो दिस मेक्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R वेयर r स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म एंड द कोफिशिएंट इज 1 एंड r के सामने इतना बड़ा कोफिशिएंट है एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म, लास्ट टर्म, ओके। तो so from this what you can say, we know in the quadratic equation product of roots, that is r1 cross r1 into r2, so product of roots will be equals to c by a. Since a is equal to 0, since a equal to 1, so product of root will be what, that is c by a will be equals to x1 square plus y1 square plus 2z x1 plus 2f y1 plus of c equal to 0. So this one is equal to x1 r1 dot r2, okay. So यहाँ से मुझे थोड़ा देखा देखा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है, it is equal to s1, right? So from this I got r1 dot r2 is equal to what, s1, okay. So we got a result r1 dot r2 is equal to what, s1, okay. So we have derived this, okay. Now तो इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, तो ऑब्जर्व दिस वन, okay. So now what we can say, if a point there is P whose coordinate is x1 comma y1 and if we point, and this is circle s equal to 0 वाला circle है ये, तो if we put x1 and y1 in place of x and y in that equation of circle, we got s1, okay. So we got s1. So ये वाला जो होगा, that is if this is point A and this is point B and if this is point C, this is point D, whatever,
if this is point E and this is point F, okay, and this is some point T. Okay, so what I can say that PA dot PB would be equals to PC dot PD is equal to PE dot PF. This is the thing you have studied in your earlier classes also, ठीक है, but this is the proof. Okay, is equal to क्या होगा यहाँ पे PT square होगा, ठीक है, is equal to PT square. All these things are equal to what? Root over S1. Okay, so all these things are equal to the S1. Okay, now PT square will be equals to what? PT square will be also equals to S1. So PT will be equals to root S1, which is already we have proved. Also फिर से हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है. ओके, ठीक है, एक बार देख लीजिए ये वाला सॉल्यूशन. सो दिस इज द पावर ऑफ अ पॉइंट. And also you can observe that r1 dot r2 is equal to this ना, यहाँ पे कोई भी थीटा का कोई भी पार्ट नहीं है. So that's how we can also say that r1 dot r2 is independent of theta. Okay, so this is also an important point that r1 dot r2 is independent of theta. Okay, ठीक है, अभी थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. So if the point P is inside the circle, ठीक है, if the point P is so inside the circle, तो यहाँ पे क्या होगा? Let's say this is A and this is B. Okay, this length is R1 and this length is R2. Okay, this length is R1 and this length is R2. So since the point P is over inside and A and B दोनों ही ऑपोजिट साइड्स में है. इफ मेरा P x1, y1 होगा सर्कल का, तो क्या होने वाला है, मेरा S1 जो होने वाला है, S1 इज नेगेटिव. ओके, सो S1 विल बी क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, तो वहां से आई कैन से दैट R1 dot R2 will be equals to R1 dot R2 will be equals to S1. ओके, माइनस ऑफ S1. यहाँ पे हमने माइनस S1 इसलिए लगाया है बिकॉज दिस S1 इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने आगे पे माइनस लगा दिया है. ठीक है, ओके. नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे P becomes the midpoint of a chord. Let's say this is M1 and let's say this is M2. Here P becomes the midpoint of the chord. Okay, so P becomes the midpoint of the chord. So we can say that PM1 is equal to PM2. Okay, so it is given condition, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PM1 dot PM2 is also equal to minus S1. So I can write PM1 square is equal to minus S1 and PM1 will be equals to root over minus S1. Don't get confused why I am putting minus over there, because S1 क्या है, ऑलरेडी हमारा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने अंदर पे माइनस डाला है. ठीक है, और S1 नेगेटिव क्यों होगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर M1 एंड M2 आर लाइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट P. तो ये वाला चीज ध्यान रखना है. ठीक है, ओके, तो फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक ए क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है, लेट पॉइंट P, let P 1, 1, equation of circle x square plus y square minus 4x minus 10y is equal to 0. Find a length of
length of chord, find the length of chord where P is midpoint. Okay, so by observing this क्वेश्चन, तो आप लोगों को दिख रहा है कि जो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, तो सर्कल होगा जैसे कि ये वाला सर्कल होगा, which okay anyway जो मेरा सर्कल होने वाला है, so let's take this is the circle. तो center will be what? 2,5 will be the center, and what will be the radius? तो radius will be equals to root over 2 square plus 5 square ना. तो root over 2 square plus 5 square मतलब 4 plus आपका कितना होगा 25, that is root 29. Okay, root over 29. So 1,1 be the, so firstly we have to check if the point 1,1 is lying outside or inside of the circle, right? So put the point over this equation, तो कुछ क्या मिल जाएगा 1 square plus 1 square minus 4 into 1 minus 10 into 1 should be equals to 0, is less than 0 होगा. Okay, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला less than 0, that means P is inside, so P is inside the circle. Okay, तो जैसे ही मुझे S1 का वैल्यू क्या मिला, so S1 is less than 0, that means P is inside the circle. Okay, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, find the length of the chord which is where P is midpoint. So P is over somewhere. Okay, P is over somewhere. Let this point is M1 and this point is M2. तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अभी मुझे यहाँ पे क्या मिला था, P M1 मिला था, तो टोटल लेंथ ऑफ कोड कितना होगा, तो टोटल लेंथ ऑफ कोड हो जाएगा मेरा, तो टोटल लेंथ ऑफ कोड हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ PM. So twice P M1 will be equals to total length of chord, that is 2 root over minus of S1. Okay, so यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, so M1 M2 will be equals to my twice root over minus of S1. Okay, twice root over minus of S1. So it will be equals to twice root over, what is minus S1, it will be equals to, पहले मैं यहाँ पे S1 का वैल्यू कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, राइट. तो पे कितना होगा 1 plus 1 minus 4 minus 10, which will be equals to what, 1 plus 1 is 2 and 14, it will be equals to minus 12. Okay, minus 12, तो ये बन जाएगा plus 12, तो it will becomes 2 root 12, तो 2 root over 4 into 3, तो ऐसे 2 निकलेगा, it will become 4 root 3. So length of chord will be equals to what, 4 root 3. Okay, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए इसका. ओके, नेक्स्ट गोइंग टू ए टॉपिक डायरेक्टर सर्कल. ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या है देखते हैं. So let's take this is a circle. Okay, let's take this is a point P. So point P is outside the circle. Okay, let's take this point as x1 comma y1. Okay, and another, and from point P two tangents are drawn to this particular circle, and where the angle made by these two circles will be equals to theta. So obviously this angle, this particular half of that angle will be equals to theta by 2. Okay, let's name this as C, and let's say this point is A. Okay, and let's say this C is alpha comma beta be the center of the circle. Okay, now so from this particular triangle, what you can say, we can say the sine theta by 2 will be equals to, the angle sine theta by 2 will be equals to what, sine theta by 2 is equal to perpendicular upon
hypotenuse. Okay, so what is perpendicular? That is equal to AC, that will be equals to R, and what is hypotenuse? That will be equals to PC. So this is equal to PC. So from this we got PC equal to what? AC cos theta by 2. Sorry, AC cosec theta by 2. We got AC cosec theta by 2. Okay, fine. Now PC is equal to what? What is the length of AC? It is equal to R cosec theta by 2. So we got the length of PC. Now by taking this particular point, let's assume we are getting a circle over here. तो हमें एक सर्कल मिल रहा है ऐसे करके, let's assume. Okay, तो वो वाला क्या होगा? तो in that case PC will be my radius and center will remain same, that is alpha comma beta. So now I can write x minus alpha square. Now I can write x minus alpha square plus y minus beta square will be equals to r square. And what is r? That is radius will be equals to PC square. That will be equals to PC square. Okay. Now x minus alpha whole square plus y minus beta whole square will be equals to PC square, right? तो PC square कितना हो जाएगा? R square cosec square theta upon 2. Now if somehow this angle between these two particular tangents become pi by 2, that is theta is equal to pi by 2, that is ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो इन दैट केस व्हाट हैपन, व्हाट विल बी माय कोसेक थीटा बाय कोसेक पाई बाय 2. सो व्हाट विल बी माय कोसेक पाई बाय 2. सो व्हाट इज sin पाई बाय 2? sin पाई बाय 2 इज sin पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 by root 2. तो कोसेक पाई बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? root 2. सो कोसेक square पाई बाय 2 will be equals to what? 2. So from this we got x minus alpha whole square plus y minus beta whole square will be equals to r square into root 2 ka square. Okay. So from this we got x minus alpha whole square plus y minus beta whole square will be equals to 2r square. And this equation is called director circle. And this is the equation of the director circle. Okay. ठीक है. So this is the equation of the director circle. So we can also write this like the locus of all the points, the locus of all the points from where tangents drawn to a circle are perpendicular is director circle. Perpendicular is director circle. Okay. And also the director circle and this parent circle both are concentric circles. Okay. Both are what? Concentric circles. So we can write this also. Both are concentric circles. And director circle radius is root 2 times the original circle. Director circle radius is root 2 times the original circle. Okay. So these are some important points to keep in mind. Okay. So please note it down. Okay, so going to the next topic, length of chord. Okay, so let's going to the next topic, length of chord. So let me draw a circle. It's not working. We are drawing a circle. It not might be. फिर से ड्रॉ करते थे, इट्स नॉट परफेक्ट. Okay, so this is a circle. Okay, now let's take a point P over here and draw a tangent to this circle. Okay, let's intersect over here
let P is x1 comma y1, okay, and take length of this. We know so L will be equals to root S1 if this equation of this circle is S. So if the equation of this circle is S is equal to 0, okay. So length of L is equal to root S1, and from the equation of this circle we will also get the radius, okay. So let's take this is point A, this is point C, okay. ठीक है. So from here, let's make an angle of theta over here, okay. यहाँ से मुझे मिल गया theta over here, okay. Now PC will be what? Let PC will be what? It will be equals to, since it makes 90 degree, the PC will be the longest side, right? So PC is the hypotenuse, so it will be equals to root over L square plus R square. So similarly from this particular triangle we will get the value of sin theta. So what will be the value of the sin theta? So sin theta will be equals to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is R and hypotenuse is this PC. So PC is equal to, we know, root over L square plus R square, okay. So let's take as this R, okay. Then cos theta. So cos theta is equal to what? Base upon hypotenuse. So base L upon root over L square plus R square, okay. Then what will be the value of the tan theta? It will be equals to sin theta by cos theta, that is R upon L. So this would be the value of tan of angle theta, okay, fine. तो इतना तक तो सही है. Now let's draw the another tangent which will be exactly equal to B, because it is also drawn from point P. We know that the tangent from a same point will be equal in length, okay. So this will also make an angle 90 degree. Now let's join AB, and let's say this point is M, okay. Now if we find the length of AM, we will get the length of AB, okay. Now in this particular triangle, in triangle PAM, what you can say, we can see that this and this, and we can write that tan of angle theta, tan theta will be equals to what? Tan theta will be equals to, tan of angle theta will be equals to perpendicular upon base, okay. We will not take this tan of angle theta because we don't know this particular length, right? So हम क्या वाला लेंगे? We will take either one and this one and this one. So we can take what? Sin theta. Okay. So we will take sin theta. So sin of angle theta will be equals to perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is AM and hypotenuse is my L. Okay. So AM will be equals to L sin theta. AM is equal to L sin theta. So we know what is sin theta. We know what is sin theta. Sin theta is equal to R by root over L square plus R square. Root over L square plus R square. So from this we got AM is equal to R times L by root over L square plus R square. Okay. So for this whole length of the chord, that is AB. So for AB, twice M. So AB is equal to, the length of chord will be equals to 2LR divided by root over L square plus R square. So this would be the length of total chord. Okay. This would be the length of chord AB. Okay. I got you have. So ये वाला तो आसान था. Okay. So simple है basic. Then we can also find the area of the triangle PAM. Okay. So sometimes question पूछता है find the area of, so area of triangle ABC. So basically area of triangle not ABC, PAB or ABP. Okay. Now ये वाला पूरा area. So this would be equals to what? Twice of area of triangle APM. If I find this particular area, I will get the whole area if I multiply it to. So what will be area of the triangle APM? It will be equals to half into base is PM into height is AM. Okay. So we have to multiply P and AM.
Okay, now how can we get PM? So how can we get PM? So PM is equal to, so basically PM will be equals to what? So for PM we have to use tan theta. So tan theta is equal to what? So tan theta will be equals to perpendicular by base. Perpendicular by base. Okay. So PM will be equals to sorry. So tan theta will be equals to AM by PM, which is perpendicular by base. So tan theta, the tan theta will get from here R upon L, and what will be the value of the AM? AM is equal to this RL divided by root over R square plus L square by, or otherwise I can write, यहाँ पे मैं इतना सारा ना करके directly I can write over here. Okay, थोड़ा इसको simplify को थोड़ा solve थोड़ा आसान बनाते हैं. So PM will be equals to what? PM will be equals to my AM. So again write tan theta is equal to AM by PM, right? So PM is equal to AM by tan theta. Okay. So PM is equal to AM by tan theta. So AM by tan theta into AM. Okay. So now what is tan theta? So tan theta is equal to R by L. तो ये वाला हो जाएगा m square by r by m square by tan theta. So what is m square? M square by tan of theta. So what is m square? M square is this RL upon root over L square plus R square का whole square divided by tan theta. Tan theta is what? R by L. R upon L. So this will be equals to what? This will be equals to our R square L square divided by L square plus R square का ऊपर में whole square into R upon L. Okay, so L will go upside, R and R gets cancelled, RL cube by R square plus L square. So this would be the area of triangle APB. Okay, so similarly we can find the area of the ABC also, okay, by using the same method. ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आल्सो. ठीक है, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. लेट्स टेक ए सर्कल. Okay, with center now this is y equal to mx plus c is a line which is tangent to this particular circle. Okay, it is a general circle with equation x square plus y square is equal to r square. Okay, which is having radius equal to r, and this is 0, 0. Okay, ठीक है. Now we know distance from the distance of a circle. So distance of a line from a point. How you can write? So distance d will be equals to we write y1 minus m times x1 minus of c by root over the coefficient of x square, x and y, that is 1 plus of m square. So this would be basically we write. So d is what here? It is radius. So r will be equals to 0 minus of c by root over 1 plus of m square. Okay. So from this what I got c is equal to plus minus r root over 1 plus of m square. Okay. So यहाँ से मुझे constant c का वैल्यू मिल गया. ठीक है. So the equation of tangent, how can we write? Now we can write the equation of tangent is y equal to mx plus minus of r root over 1 plus of m square. So this would be the equation of tangent. Okay, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो,
here y equal to mx plus minus r root over 1 plus of m square. यहाँ पे plus and minus is coming. Why it is coming? Because there are two lines are possible which has slope same slope m. क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ पे भी possible होगा. Okay, that's why we will get two different values of c. ठीक है, कांस्टेंट जो c होगा यहाँ पे हमें दो डिफरेंस वैल्यूज मिलेगा फॉर दिस लाइन एंड फॉर वन इज फॉर अनदर लाइन. तो प्लस माइनस इज कमिंग डिपिक्टिंग देयर विल बी टू पॉसिबल लाइन विद द सेम स्लोप m. ओके, सो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है. ओके, नाउ वी गॉट y इक्वल टू mx प्लस माइनस r root over 1 plus of m square. Now putting this particular value in this equation, so what we will get? So x square plus y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है mx प्लस माइनस r रूट ओवर 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर प्लस ट्वाइस mx इंटू r 1 plus of m square is equal to r square. Okay, so like this. Okay, so what you can do, एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमने जब प्लस माइनस आर दिया है तो इट बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ना, तो इसको थोड़ा सिंपल ही रखते हैं. जैसे कि इस वाले पोर्शन को हटा के हम सीधा क्या लिखेंगे, डायरेक्टली वही लिख देंगे. ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ना लिख के y के जगह पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस ही लिखते हैं टू कीप इट सिंपल. ओके, सो ये बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर plus c square plus 2mxc is equal to r square. Okay, from here the coefficient of x square is 1 plus of m square plus twice x into c into m plus of c square minus r square equal to 0. Okay, now you can observe that x square 1 plus of m square like this coming, right? Now if I make quadratic equation, so what I will get? We will get sum of roots, that is sum of roots will be what? X will be over here. So sum of roots, that is x1 plus x2 will be what? Sum of roots is equal to minus of b by a. This is minus b. Minus of 2mc by a. What is m? That is 1 plus of m square. Okay. Now from this sum of roots, x1 plus x2 will be equals to what? Minus 2mc. So what is c? C is equal to plus minus. C is equal to plus minus r root over 1 plus of m square. That's why plus minus is coming. Plus minus r root over r times root over 1 plus of m square divided by 1 plus of m square. Since it is a tangent, तो we know यहाँ पे क्या होगा, x1 equal to x2 होगा क्योंकि it only touches at one particular point, right? So हम यहाँ पे लिख सकते हैं twice x is equal to 2mr root over 1 plus of m square by 1 plus of m square. यहाँ पे plus minus होगा, 2 and 2 getting cancelled. From this we got mr रूट ओवर 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट प्लस माइनस आएगा. ठीक है, प्लस माइनस इज डिपिक्टिंग दैट वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ओवर वन ओवर हियर एंड अनदर ओवर हियर ओनली. ओके, और यहाँ पे x1 प्लस x2 को मैंने जैसे लिखा है बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन वी हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ x. ओके, so that's why this. Okay, similarly after solving y we will get what? Y will be equals to, यहाँ पे मुझे मिलेगा m by plus minus root over 1 plus of m square. Okay, so this would be the value of the y. Okay, here y will be equals to what?
वाइल भी यहाँ पे m नहीं होगा, यहाँ पे r होगा, ठीक है, r बाय प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर. दिस आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी x एंड y. ओके, नाउ यहाँ पे मुझे क्या मिला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर. फॉर दिस, ओके, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड मीन्स 0,0 ना होके अगर मेरे सेंटर कोई h, a हो 0,0 ना होके इफ माई सेंटर इज समथिंग h, k, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट यू हैव टू रिप्लेस आवर y बाय y माइनस ऑफ k विल बी इक्वल्स टू m. x के जगह पे क्या रखना है, x माइनस ऑफ h प्लस माइनस r रूट ओवर 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर. सो दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, तो ये हो जाएगा. सो दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m. ओके, ठीक है. सो ये वाला चीज एग्जाम एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए. ओके, सो नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन. ओके, orthogonal intersection. So orthogonal intersection. So in general, whenever two curves meet each other, let's say this curve and this curve meet each other. Okay, let's say this is the equation of some curve and this is the equation of some other curve. Since these curves are meeting each other, so if someone asks what is the angle between these two particular curves, what you have to do, we have to draw the tangent at the meeting point for the both the curves. Okay, for this particular curve we have to make the tangent at this point, and for this particular curve we have to make the tangent as this particular point, and the angle between their tangents will be the angle between these two particular curves. Okay, so similarly in the circles also, whenever the two circles meet each other, okay, then we have to draw the tangents. We have to draw the tangents for both of the circle. But orthogonal intersection means when two circles meet each other at 90 degree, that the angle between them will be right angles. Okay, so in that case something special happened, that if these two triangles meet each other at right angles, we know that this will pass through its center and this tangent will also pass through the center of the another circle. Okay, so if this is center C1 and this is center C2, let's say, and we know this is R1, let's say this is R2. Okay, so what you can say, I can say that distance C1 C2 will be equals to what, C1 C2 square will be equals to R1 square plus R2 square. Okay, let's take this circle is ZFC circle, G1 F1 and C1 circle, not C, let's take this circle having center G1 and F1. Okay, and their centers are O1 and O2. Okay, and their constant term is C1. So G1 F1 and C1, and यहाँ पे क्या है G2 F2 and C2, and C2 is the constant term. यहाँ पे centers को हमने O1 and O2 से represent किया है. Okay, so distance from O1 and O1 O2 whole square will be equals to R1 square plus R2 square. Okay, since this is, so इसका radius, इसका center क्या होगा minus G1 minus F1, and इसका center क्या होगा minus G2 minus F2. Okay, so what I can write G1 minus G2 का whole square plus F1 minus F2 का whole square. We know what is R1. R1 square will be equals to what?
g1 square plus f1 square minus of c1. Okay, what is r2 square? It will be equals to g2 square plus f2 square minus of c2. Okay, so I can write g1 square plus f1 square plus of minus of c1 plus g2 square plus f2 square minus of c2. Okay, this is the thing. So from this one I can write g1 square plus g2 square minus of 2g1 g2 plus f1 square plus f2 square plus minus 2f1 f2 will be equals to g1 square plus f1 square minus c1 plus g2 square plus f2 square minus of c2. From this g1 and g1 getting cancelled, g2 and g2 is getting cancelled, f1 in f1 is getting cancelled, and f2 is f2 getting cancelled. So from this we got minus g1 g2 is equal to minus c1 minus c2. Minus c1 minus c2. So from this we got what? 2g1 g2 will be equals to c1 plus of c2. Okay. So this is the condition of orthogonality. Okay. So this is the condition for orthogonality of the two circles. So 2g1 g2 यहाँ पे और एक है minus 2f1 f2 भी left है ना, this one. So 2g1 g2 plus 2f1 f2. Okay, so finally I can write 2g1 g2 plus f1 f2 will be equals to c1 plus of c2. Okay, so this will be the condition of two orthogonal circles. Okay, so thank you for today. But in the chapter circle we had more other points, topics like pole and polar, then we have radical axis, then the equation of circle passing through a point and a given circle, and the equation of circle touching a circle and a line, then equation of circle, what is the equation of the circle having passing through two other circle, that is s plus lambda s, and many things left. And also we have to observe the general results for conic, like t square is equal to ss1, then how we can write the equation of tangent, that is t equal to 0, or how we can write the equation of the chord of contact, again it will be equals to t equal to 0. So many things are left. Okay, so we'll meet in the next lecture with these topics. Thank you.